नर कॉकरोच के उदर भाग में 9 खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि मादा में केवल 7 खंड ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। नर के 9वें उदर खंड की स्टर्नम से जुड़ी एक जोड़ी गुदा कंटिकाएं यानी एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं, जबकि ये फीमेल्स में अनुपस्थित होते हैं। नर में उदर का भाग नुकीला होता है व 7वीं स्टर्नम अविभाजित होती है, जबकि मादा में उदर का पश्च भाग चौड़ा होता है तथा 7वीं स्टर्नम 2 भाग में विभाजित होती है। नर के पंख बड़े होते हैं, जबकि मादा में पंख छोटे होते हैं। In cockroach, the sexual dimorphism is clearly observed. Cockroaches are dioecious animal. It means that the sexes are separate. Both male and female can be externally identified by observing the following features. First, male are small in size and they are flat, while the females are bigger in size and they are broad. The 9 segments in abdomen are clearly observed in case of male cockroach, while in females 7 segments are clearly observed in the abdomen. Males have anal styles, while the anal styles are absent in females. The posterior end of the male abdomen is pointed and the 7th sternum is undivided, while the posterior end of female cockroach is broad and the 7th sternum is divided into 2 parts. The wings of male cockroach are larger or bigger than the wings of the female. Now discussing about the male reproductive system, it comprises of testis, vasa differentia, ejaculatory duct, utricular glands, phallic glands, and external genitalia. Testis. There is a pair of 3 lobed testes lying dorsolaterally in the 4th and 5th abdominal segment, being embedded in the fat body. The testes are well developed and elaborate structure in young cockroach and they are full of sperms. The testes become non-functional and reduced in old adult, but some sperm may still be found in them. The second structure is the vasa differentia. From each testis arises a thin thread-like white vas deferens. Both the vas differentia pass backward almost to the posterior end of the abdomen and then bend forward to meet in the middle and open into an ejaculatory duct. Ejaculatory duct is the third important structure of male reproductive organs or system.
Ejaculatory duct is an elongated, wide median duct which runs backward in the abdomen and open out by male gonopore situated ventral to the anus. Utricular or mushroom shaped glands. It is a large accessory reproductive gland, whitish in color and situated at the junction of vasa differentia with ejaculatory duct. It has a mass of glandular tubule of three kinds: the peripheral long tubule or utriculi majoris. The central tubules are small, short tubule called utriculi brevioris, and behind the short central tubule are some short but more bulbous tubule forming the seminal vesicle filled with the sperms. Phallic or conglobate gland. It is a long and club-shaped accessory gland. Its anterior broader end lies in the sixth segment, slightly to the right of the nerve cord. It narrows posteriorly into a tubular structure and finally tapers to open by a separate aperture located close to the male gonopore at the hind end of the body. External genitalia. Some chitinous asymmetrical structures are found surrounding the male gonopore at the end of the abdomen. These are three phallomeres or male gonapophyses which constitute the external genitalia. Right phallomere. It is mid-dorsal in position. It has two chitinous but membranous horizontal opposing plate and a broad serrate lobe with a saw-toothed edge and two large teeth, and at its posterior side it has a sickle-shaped hook. Left phallomeres. It has a broad base from which several structure arises. On the extreme left is a long slender arm with a hook or with a curved hook called titillator. Next to titillator is a shorter and broader arm ending in the black hammer-like head called pseudopenis. Close to pseudopenis are three small soft lobes, one of which bear a hook and is called an aspirate lobe. The duct of the phallic gland traverses the left phallomeres and open between the aspirate lobe and pseudopenis. Ventral phallomere. It is a very simple structure and it
lies partly below the right phallomere. It has a large brown plate and bears the male gonopore. Here is the diagram of three external genitalia. A is the picture of ventral phallomere. B is the picture of left phallomere. Here you can see the titillator, pseudopenis, aspirate lobe which has got a curved hook, the phallic gland opening through or in between the three lobes, right phallomere, you can see the presence of serrate lobe, again a curved hook and two opposing plate. नर जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों से बना होता है। वृषण, शुक्रवहिकाएं, स्खलन वहिका यानी कि इजैक्युलेटरी डक्ट, छत्रक ग्रंथि यूट्रिकुलर ग्लैंड, फेलिक ग्रंथि फेलिक ग्लैंड और बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वृषण, टेस्टिस। कॉकरोच में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस एब्डोमेन यानी उदर के चौथे खंड से छठे खंड तक दोनों पार्श्व किनारों पर वसाकाय यानी फैट बॉडीज में धसे हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस 3 पालियों यानी लोब्स का बना होता है। प्रत्येक पाली फिर छोटे छोटे श्वेताभ पुट्टिकाएं वाइट फॉलिकल्स की बनी होती हैं। ये पुट्टिकाएं एक धागे नुमा महीन शुक्रवहिका वास डिफरेंस के चारों तरफ व्यवस्थित रहती है। ये पुट्टिकाएं जनन उपकला यानी जर्माइनल लेयर द्वारा अस्तरित होती हैं तथा शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं। शुक्रवहिकाएं वास डिफरेंशिया। प्रत्येक टेस्टिस से एक एक महीन शुक्रवहिका निकलती है जो नीचे की ओर जाकर ऊपर की तरफ मुड़कर 8वें खंड में स्खलन वहिका में यानी इजैक्युलेटरी डक्ट में खुल जाती है। इजैक्युलेटरी डक्ट यह एक लंबी तुम्बाकार संकुचनशील नलिका होती है। यह पीछे की तरफ नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। भीतर की तरफ यह क्यूटिकल द्वारा अस्तरित होती है। स्खलन वहिका के अगले भाग की अधर सतह पर छोटे छोटे कोशों के 2 समूह पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं का संचय करते हैं। ये शुक्राशयों का निर्माण करते हैं यानी सेमिनल वेसिकल्स का निर्माण करते हैं।